Today, once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I have started the recording, and today we are going to in the Walaikum first assalam. period, we are going to talk about this importance and significance of the ahadith. Why? Because it is the second source of knowledge after Quran. The most important thing is the Sunnah, that how Prophet Muhammad peace be upon him lived his life. And if we learn it properly, yesterday, yesterday on my Facebook, we received, I saw something on the Facebook. A child has, a young child has recited the whole Quran in 10 hours and some minutes, 20, 30 minutes. Children understand this Quran is not and then he made some Guinness Book of World Record. Now, Quran is not to be made into a record. And if that child finished his Quran in 10 minutes and 20 seconds or something like that, how many of you think he did a good job? Yes, speak up. Let me hear you. Yes, Hamna, we are doing Islamic studies and then we are on page number, what was it, 74? 167, history and importance of a hadith and authentic or sahih hadith. Question to all of you is that, well, let me repeat everybody's name there. Here, Aqsa is here, Hamna is here, Aqsa, Hamna, Kinza, Kissa, Huzefa, Yusra, Hajra. So we have 7 participants. Very good. Question is this: a child made a new record by reciting Quran, complete Quran, in 10 hours and some minutes. Did he do a good job or he did a bad job? बेटा इतना खौफजदा नहीं होते, बोलते हैं ना, कुछ बताते हैं ना, क्या आपका जो भी ख्याल है, अच्छा सही किया उसने, गलत किया. इतने दिन से आप लोगों को जो इस्लाम सिखा रहे हैं, बताएं किसने सही किया या गलत किया. Sir, he did it. He did not understand. Kissa, repeat your answer. Sir, he did that wrong. Yes, Kissa is saying he did wrong. Okay, so correct answer, he did wrong. Now tell me, who can tell me what he did wrong? Because Quran is the book of guidance. Yes, very good answer, Aksa. See, Quran Sir, is the book because you of have to guidance recite and you have to Quran read it and slowly and understand it. understand the proper Yes, words. it is not something that, it is not a competition that you who can read it more quickly. And this is the first thing that Quran has to be understood. Second point, he went against the Sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. Prophet Muhammad, peace be upon him, said, Kama Kala Kal, that if anybody reads the Quran in less than 3 days, he will not get the understanding of the Quran. So the minimum, उर्दू में कहते हैं इसे फहम, क्या क्या कोई शख्स जो है 3 दिन से कम अरसे के अंदर कुरान पढ़ेगा तो उसके अंदर जो है कुरान का फहम नहीं आएगा. So if a person wants to read the Quran, he should read it every day, make it a habit of it with translation, compulsory, because in our country 99% of the people or 99.5% of the people do not speak Arabic. When they do not speak Arabic,
just the tilawat Quran is not enough. You have to read it in a translation and then understand it with the help of the correct sunnahs and tafsir, and everything is available for you to understand the Quran. Now coming back, so this is something we shouldn't be doing this, and this is not a competition. Coming back to the authentic or the Sahih Ahadith, 3-4 points that you have to understand it. Number one, which I already said it yesterday, but I'm repeating them one more time. Number one, authentic hadith can never contradict Quran. Contradict means उसके कभी against नहीं जा सकता. कोई भी सही हदीस जो है कुरान के against नहीं जा सकती. Number two, it never contradicts already established other correct ahadiths. क्या मतलब हुआ कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी हैं कि ये अहादीस जो है सही हैं, करेक्ट हैं, ऑथेंटिक हैं, सो अहादीस कैन नॉट गो अगेंस्ट देम आल्सो. इट कैन नॉट गो अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर. क्या लॉज ऑफ नेचर के खिलाफ नहीं जाना. अल्लाह ने जो कानून बनाया है उसके खिलाफ जो है अहादीस नहीं जाती. थर्ड वन इज रिकग्नाइजेस हिस्टोरिकल फैक्ट्स. एक चीज है जो किसी जंग में हुई या कोई बात हुई, दैट इज कॉल्ड अ हिस्टोरिकल फैक्ट. सो एक और हदीस आप बना के ये नहीं कह सकते कि एक्चुअली ये नहीं हुआ था, ये हुआ था. दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल फैक्ट्स. देखिए, वट एवर हैपेंड इन जंग बदर, and then whatever happened in Jang Ohad and the battle of the trenches, and there were so many other battles that happened. आप उसको चेंज करें हदीस से कि नहीं नहीं असल में ये वाली जंग पहले हुई थी, ये वाली बाद में हुई थी. Okay, this is a very broad example but easy to understand. So you cannot change any historical fact. You cannot change any historical fact. जब एक दफा जो है देखें, why do we call कादियानी काफिर? We call Qadiani kafir. It should be completely clear. We call Qadiani kafir for a simple reason. One reason is this, that they did not consider Prophet Muhammad, peace be upon him, as the last messenger of Allah, and they twisted the words, and then they said that now we have a new messenger and his name is क्या नाम था उसका, Ahmad Raza Qadiani, something like that. Okay. So when you are going to establish a new messenger from Allah, this is a lie. And right after Prophet Muhammad, peace be upon him, there were many people who called themselves the new messengers of Allah. And the Sahaba Karam Ajmain, Abu Bakr Siddiq, Umar Farooq, they fought with them and they killed them, or either they repented and accepted Islam. So this is why, or these Qadiani, Mirzai, Ahmadi, whatever they have 2-3 names, they might have some other name also, and they have put new things into the Quran also. They are non-Muslim. They are not considered Muslims. Everybody clear about this? Okay. See, now we are going to skip the next paragraph, the sanad. Okay. Because first, this is first part. No, we are not going to skip it. That was the first part. Okay. About these facts that, 4 points that I told you. And then I gave you the example yesterday also that nowadays there is a hadith people are putting in their mosque, and that hadith they are saying that if you read that Darood, and the reward is so much that it is even bigger. It is even bigger than the Shab-e Qadar. So much reward you are getting. So if somebody is making a hadith like this, that person is also a liar. समझ में आया? That person also is a liar. Why that person is a liar? And he becomes kafir also ultimately.
Ultimately اس لیے کہ جو ہے it's a technical kafir. You know, there is a person who is a open kafir. So open kafir to jo hai is easy to detect. But this technical kafir is very difficult to detect. Why they are very difficult to detect? Because they have complications after complications and twists and turns and so forth. But why I call these people, non-Muslims, I will tell you why I call them non-Muslims. Prophet Muhammad, peace be upon him, said in his correct hadith, which is part of the Sahasatta, which we are going to read about them in the next classes, inshallah, after the holiday. Prophet Muhammad, peace be upon him, said, اگر آپ نے مجھ سے کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی ہے، جو میں نے نہیں کہی ہے، تو وہ ہم میں سے نہیں. کما قال قال لیٹ می ریپیٹ دا حدیث. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے میرے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کی ہے یا نہیں کہی ہے تو وہ ہم میں سے نہیں. So this is such a big sin. It is not a small sin. ہم میں سے نہیں، مسلمانوں میں سے نہیں. تو لوگ جس وقت یہ جھوٹ بول کے اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے استعمال کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑے ٹیکنیکل کافر ہے. اور اس کا جو ہے آخر میں فائنل جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی فیصلہ کریں گے. بٹ واٹ وی ہیو ٹو ڈو، وی ہیو ٹو اسٹے اوے فرام دیم. جتنی ان سے دور رہ سکتے ہیں، جتنی ان سے دور رہ سکتے ہیں ان سے دور رہیں. نہیں بھائی ہمیں آپ کے مذہب کے اوپر نہیں چلنا. وہ کہیں فرقہ ہے، فرقہ نہیں ہے، یہ مذہب ہے. جب آپ نے یہ پوری پرانی تعلیمات کو ختم کر دیا اور اپنی ایک نئی تعلیمات لے کے آ گئے تو اس کو فرقہ تھوڑی کہا جاتا. فرقہ تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں بہت، کہ ہاتھ سینے پہ باندھ لیا تو کسی نے پیٹ پہ باندھ لیا تو کسی نے جو ہے وہ جو سینے اور پیٹ کے درمیان میں باندھ لیا. تو یہ اس قسم کے جو چھوٹے چھوٹے سے اختلافات ہوتے ہیں، دوز آر کالڈ فرقہ. جب بھی آپ نے کوئی نیا مذہب شروع کر دیا وہ فرقہ نہیں ہوتا. Now let's read Sanad. Here Hajra is here. Hajra wants to read. Here Hajra read Sanad. What is Sanad? The sanad must be full and unbroken, and each narrator mentioned in it must be known for his knowledge, piety, memory, and trustworthiness. The narrators must have met each other, and the chain of information must go back to the Holy Prophet, peace be upon him. The best sanad consists of those narrators who met the person relating a hadith and the person to whom they related it. The chain of transmission should be unbroken. The narrators should be at an age at which they could understand the importance of what they had heard. The report of a child or an insane person could be not accepted. The narrator must be a Muslim. The higher the qualification of a narrator, the greater the authority of a tradition reported by him. Now understand first, write a short definition. What is Sanad? Okay. Because you have to understand what is Sanad before you do anything else. Sanad means a chain of transmitters. Chain of transmitters. A chain of transmitters. اچھا ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں دی نریٹر آف دی احادیث. ٹرانسمیٹر تو جو ٹرانسفر کرتا ہے اسے کہتے ہیں، لیکن ہیئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نریٹرز پیپل ہو کوٹ دا حدیث. نریٹر the people who quote the hadith. So the chain of transmission should be unbroken. Everybody got that? Narrator and sanad and transmitter. Okay. So now this is how you have to look at it, that it should be unbroken. Unbroken کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ The best ahadith are the ones that the people, the narrators, listen to them directly from the Sahaba. These are the best one. Then they must have heard it from the Tabain or the Taba Tabain.
This is why I concentrate on the first 300 years of the Sahaba Karam Ajmain and the Tabain and the Taba Tabain. The first 300 years of the companions, the successors of the companions, and the successors of successors. This is how we look at it. This is how we look at it. Why we look at it like this? That these are the people who are given the basharat of the Jannah. उनको जो है प्रेडिक्शन की गई थी कि ये लोग जन्नत में जाएंगे. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सब में अच्छे लोग कौन से हैं. उन्होंने कहा जिन्होंने मुझे देखा, दैट मीन्स द सहाबा. फिर पूछा गया कि उससे और कौन से होंगे. कहा जिन्होंने जो सहाबा को देखा. और पूछा और कौन से होंगे. इन्होंने कहा जिन्होंने सहाबा को देखा. या यूँ समझ लें सहाबा के जो है सक्सेसर्स को देखा. तो सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, three generations. These were the best three generations. तो लिहाजा हमें जो भी अहादीस, we want to get these अहादीस. Muhammad Ali Ghori, we are here doing Islamic studies. We are on page number 167. Islamic studies, page number 167. So this is how we look at it कि जो सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन. जिसने सहाबा को देखा उसे कहते हैं ताबईन. जिसने जो है ताबईन को देखा उनको कहते हैं तबा ताबईन. तो जो है इसको इंग्लिश में क्या है? सहाबा कंपेनियंस, ताबईन सक्सेसर्स ऑफ द कंपेनियंस, तबा ताबईन सक्सेसर्स ऑफ सक्सेसर्स. एवरीबॉडी गॉट इट? ठीक है, इसको लिखना है, अंडरस्टैंड इट. क्वेश्चन आएगा. तो चेन ऑफ कमांड शुड बी अनब्रोकन. इसीलिए जो है ये जो बाद में किताबें लिखी गई हैं 400 साल बाद, 350 400 साल बाद, आई डोंट फॉलो दोस बुक्स. व्हाई? क्या जरूरत है जब ऑलरेडी बुखारी वाज रिटन एंड देन बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्न माजा, निसाई, मौता, these are all written in the first 300 years. अगर मेरे पास ऑलरेडी फर्स्ट 300 years की अहादीत हैं, these are more than enough for me to live my life. ये जो फिरके बने हैं ना झूठी अहादीस की बेसिस के ऊपर, ये सारे फिरके बने. क्योंकि ये आप कहीं पे भी देख लें, कहीं पे नहीं देख लें, कहीं पे भी देख लें. इफ यू रीड द कुरान, दिस इज व्हाई हम कहते हैं कि रीड द कुरान. जब आप रीड द कुरान करेक्टली, व्हेन यू गोइंग टू रीड द कुरान करेक्टली, देन यू विल रियलाइज दैट सारे फिरके खत्म हो जाएंगे. सारे फिरके खत्म हो जाएंगे, सबको पता चल जाएगा हम दूसरे मजहब पे. व्हेन यू विल रीड द कुरान. मुझे कहने की जरूरत नहीं है. राइट नाउ यू आर गोइंग टू हैव दिस 7 days. ठीक है, तो इसके अंदर बैठ जाओ. ऑल ऑफ यू अल्हम्दुलिल्लाह हैव योर कुरान एंड देयर इज अ 5% बोनस आल्सो. तो उसको बैठ के पढ़ें रोजाना, आधा घंटा 1 घंटा ट्रांसलेशन के साथ. सो यू विल सी, यू विल डू 400-500 पेजेस. और फिर उसको कोशिश करेंगे बाय मार्च अप्रैल यू फिनिश इट ऑल. स्टार्ट नाउ एवरीबॉडी. See, I'm giving you an assignment that start reading the Quran. Agar I already told you guys from the beginning of the year. Remember, everybody. अगर नहीं remember है तो it's a reminder. Start reading the translation of the Quran. There is a 5% bonus towards your annual exam, and all of you have the Quran also. All the children who are here with us in grade 6, they should have the same Quran that which we have, and the people who don't have it, take it from the school. Compulsory. You have to start reading. You cannot understand Islam without reading Quran. ये जितनी भी बुक्स हैं या हदीस की और जो है ये इस्लामिक स्टडीज की, कहाँ से आती है? कुरान से आती है. आप किसी की कुरान इस्लामिक स्टडीज की बुक पढ़ के मत समझेंगे कि आप मुसलमान हो गए. मत यकीन करें. मैं भी जो भी कह रहा हूँ उस पर मत यकीन करें. आई डोंट वांट यू टू बिलीव मी. मैं चाहता ही नहीं कि आप मुझ पर यकीन करें. मैं चाहता हूँ कि यू बिलीव इन अल्लाह. जो अल्लाह ने कहा है वो सच है. और ये सच आपको कैसे पता चलेगा? व्हेन यू गोइंग टू रीड द कुरान. आप कुरान नहीं पढ़ेंगे, हमेशा गुमराही के जो है समंदर में डुबकियां मारते रहेंगे और गोते खाते रहेंगे और खारा पानी जो है पीते रहेंगे. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? क्लियर?
Everybody understand that you have to start reading the Quran with translation starting today. अगर शुरू नहीं किया है तो starting today, every day. अगर कम से कम if you sit down for 15 minutes तो भी आपका जो है बहुत सारा खत्म हो जाएगा. Okay, make it a habit that sit down for 15 minutes minimum and 1 hour maximum. 15 minutes to 1 hour. In 15 minutes, you will read about 10-15 pages. Okay, and in 1 hour, so this way you will have about 50-60 pages read every day. पूरा जो पेजेस हैं उसके अंदर तकरीबन ये 1800 पेजेस हैं, तो those 1800 pages will be finished. और जो भी आपको कहे ना बेटा ये क्या कर रहे हो तुमने, ये क्या कर दिया, उनसे कहो भाग जाए यहाँ से, दूर हो जाए हमारी नजरों से. अल्लाह की किताब है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ. ठीक है, फिर सुने ना, कोई मौलवी आपको लेट के पढ़ना है लेट के पढ़ो, बैठ के पढ़ना है बैठ के पढ़ो, कोई बेअदबी नहीं होती. जो कुरान को नहीं पढ़ रहा वो बेअदब है. पहले से तो नहीं लेट के पढ़ो, इतनी ज्यादा नहीं हूँ. साफ सुथरे कपड़े पहन के वुजू करके बैठे हैं आप, और जो है कुरान को बैठ के पढ़े. और जो है आज आप जो है सऊदी अरेबिया में अरब मुल्कों में जाते हैं, वहाँ पे मज़ार नहीं है. ठीक है, वहाँ पे मज़ार नहीं है, वहाँ पे मज़ार नहीं है, वहाँ पे ईद मिलादुन नबी नहीं है, वहाँ पे मातम नहीं है. क्यों नहीं है? दे रीड द कुरान. वो कहते हैं कहाँ लिखा है मातम या अकी मातम, वेयर शुड आई डू मातम. हाँ मातम, हाँ ऐसे ही हो मजाक उड़ाते हैं, मातम करना है मातम. इसलिए कहते हैं कुल्लू पाकिस्तानी बिद्दती कुल्लू पाकिस्तानी हिंदैया. हाँ आप लोग तो बैठे ही नहीं ना अरबियों के साथ, बैठेंगे कैसे? जब आप यहाँ पे कुएं में बैठे रहेंगे पाकिस्तान के अंदर, तो जो है उसके बाद आप बाहर निकलेंगे ही नहीं. बाहर निकलें, बाहर कैसे निकलेंगे? व्हेन यू गोइंग टू हैव गुड एजुकेशन. गुड एजुकेशन स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान. जब आपके पास कुरान का इल्म होगा तो आप बाहर जाएंगे. व्हेन यू गोइंग टू गो आउटसाइड नोबडी विल बी एबल टू कंफ्यूज यू. हाँ, नोबडी विल बी एबल टू कंफ्यूज यू. क्यों? मैं आपको एक मोटी सी मिसाल दे देता हूँ. पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से मुल्क के अंदर जो है, किसी ने बताया कि उसकी जो है 30 बीवियां हैं. कितनी बीवी हैं? 30 बीवी हैं. एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है. तो बताएं, इज अ गुड थिंग ही डिड और बैड थिंग ही डिड? हाई जाए Bad सही thing. बैड? Bad thing. बैड थिंग. Bad thing. करेक्ट, बैड थिंग. Bad thing. वेरी गुड. बैड. क्यों बैड है? क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान में फरमा दिया 4 से ज्यादा बीवियां नहीं हो सकती. जब 4 से ज्यादा अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया तो फिर जिसने जो भी किया गुनाह, इट्स अ सिन. तो ये इस तरीके से ही और चीजें हैं. जब मेरे अल्लाह ने मुझसे कह दिया मेरी इबादत करो, किसकी इबादत करो? अल्लाह की इबादत करो, तो कौन है जो मुझे कहे कि ये गैर अल्लाह की इबादत? कोई मुझसे आके कहे कि ये तुम इसकी इबादत कर लो, मैं कहूँ भाग जाए. समझ में आ रही? कोई आके आपसे कहे कि ये आए हम आज सूरज की इबादत करते हैं, इसका बड़ा फायदा होता है. और पता है ऐसे आके नहीं कहते कि सूरज की इबादत करें. देयर इज अ वेरी बिग सेक्ट इन अमेरिका, वो सूरज की इबादत करते हैं. कैसे? वो कहते नहीं सूरज की इबादत करते हैं, कहते हैं वो सुबह उठ के सूरज के आगे खड़े हो जाते हैं, और हजारों सैकड़ों के हिसाब से जो है लोग सूरज के आगे खड़े होते हैं और सूरज को देखते हैं. ये उनकी ये इबादत है. अंडरस्टैंड दिस? तो ये इस तरीके से लोगों को गुमराह करते जाते हैं. हम यहाँ पर आ गए, कंटिन्यूस चेन ऑफ हदीथ जो है यहाँ पर आए. ठीक है, सनद के अंदर it should be unbroken. A person should have knowledge. देखिए फिर उसके अंदर अंडरलाइन करें, रीड दिस नॉलेज, मस्ट बी नोन फॉर हिज नॉलेज. एक पॉइंट. पाइटी, नॉलेज क्या है? इल्म. पाइटी, गुड थिंग्स. मेमोरी, हाफजा. ट्रस्टवर्दीनेस, क्या? ईमानदार, ऑनेस्ट.
تو کوئی بھی حدیث کوئی نریٹ کر رہا ہے تو آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو ہے صحیح بات بھی کر رہا ہے یا نہیں صحیح بات کر رہا. یہ خود کیسا تھا, was he a thief, was he a good man, was he a bad man. So یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھی جاتی ہیں. دس از اے ٹاپک فار دا مفتیز. ٹھیک ہے, مفتیز کا کیا ہے کہ یہ all their life they dedicate their life and they study and they teach in the madrasa and so forth. So muftis are good people and they study the religion correctly and they try to give and guide you with the best of their ability. تو یہ ان کا کام ہے. اچھا, so in the Sahih Hadith there are almost 8-9 points that you have to cover. So you have to cover all of these points. What is the authentic Hadith? تو آپ کو جو ہے you have to write each one of these points. جو اوپر سے لے کے نیچے تک اب تک جو ہے میں لکھوا چکا ہوں, اور پھر اس کے اندر ہم بیٹھیں گے. then we will see some more also. Next come the second kind of hadith. Okay, so here kissa, let's read the approved or Hasan hadith. Okay, sir. Approved or Hasan hadith. This hadith is similar to an authentic hadith, except that its narrators or some of its narrators have been found defective in memory in comparison with the narrators of authentic hadith. Now Sir, in should this I read? underline, بس ختم ہوگی میرے خیال میں نہیں آگے. Yes, no. Underline defective in memory. Defective in memory. اب کیا مطلب کیا ہوا defective in memory؟ کیا یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں. Again, there are in our school also there are students who always come 90 plus, meaning they are either satisfactory or outstanding, اور یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں. So these are children who have mashallah, 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 excellent brain power, excellent memory. And اب ان کے پاس ایک کچھ ایسے بھی تھے بچے جو کہ excellent memory but extremely bad. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثلا they were very smart but poor character, bad manners. تو لہذا جو ہے اگر آپ اسکول میں بھی کوئی بات سیکھنا چاہیں گے so you learn from the students who have good memory, good recollection, good manners. تو حسن حدیث کے اندر پرابلم کیا ہے کہ there some of the narrator, جب ایک چین آف نریٹر ہے نا, دیکھیں چین کسے کہتے ہیں. میں نے ایک بات کہی, مجھ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت یہ اس کلاس کے اندر یہ حاجرہ ہے, تو یہ میں نے حاجرہ کو ایک بات سمجھائی. حاجرہ کی جو سہیلی ہے, اس کے اندر اس نے جو ہمنا ہے, یسرا ہے, اس کی جو 8-9 سال پرانی سہیلیاں ہیں, تو اس نے ہمنا یسرا کو بتایا, پھر ہمنا یسرا نے جو اور لوگوں کو بتایا. اب ان بٹوین جو ہے اس کو جو ہے یہ جو آئی کہ جو ہے سرشاد سے حاجرہ, حاجرہ سے ہمنا, ہمنا سے یسرا, پھر یسرا نے اوروں کو بتایا. اس کو کہتے ہیں سند, چین آف نریٹرز. تو اس کے اندر جو ہے گڈ اسٹوڈنٹس آئیں گے, گڈ نریٹر آئیں گے, تو وہ آپ کو جو ہے they will going to teach you correct thing. اب بیچ میں وہ دوسرے آ گئے نام لیے بغیر, آپ کو پتا ہے, جو کہ جو ہے انڈر 70 and 60 رہتے ہیں, سارا سال ہی انڈر 60-70 رہتے ہیں, ایک دوسرے کا چھاپتے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, چھاپنا نہیں, چھاپا دے دوں, چھاپا لگا لوں. اب آپ ان سے پوچھیں گے کہ سر کیا پڑھاتے ہیں, سر کیا کرتے تھے, سر کیا کر رہے ہیں, تو جو ہے آف کورس دے آر گوئنگ ٹو گیو یو رانگ انفارمیشن. تو کلاس میں آتے نہیں ہیں, ورک پورا کرتے نہیں ہیں, کاپی کرتے رہتے ہیں, سو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی گڈ نریٹرز. Now, any question regarding Hasan Hadith, any word you don't understand in the two of them, any word meaning that you don't understand in the authentic or the Hasan Hadith? ابھی فیبریکیٹڈ پہ آئے نہیں, ہم نہیں آئے, نہیں کوئی نہیں.
آئی نہیں. حسن حدیث and authentic حدیث. Fabricated بھی نہیں آئے نا, اس کا نیکسٹ حدیث. See, right now we are doing authentic hadith and Hasan hadith. Any word meanings in the authentic and Hasan hadith? Abhi weak hadith and fabricated hadith aage aa rahi hai. If you turn the page, then you will see them. So you will get the complete detail. No question. All right, now let's turn the page. Sir, Yes, meaning of piety. piety, good manners. Person who is doing everything good or tries to do everything good is a pious person. Pious se piety आई. Good manners, good deeds, good actions, everything good is piety. Following the orders of Allah subhanahu wa ta'ala to the best possible way. Following the orders of Allah subhanahu wa ta'ala in the best possible way is called following the orders of Allah subhanahu wa ta'ala in the best possible way. Any other words, children? All right, now turn the page and let's see Yusra. Let's read weak or zaif hadith. Weak or Zaif hadith. A hadith is considered to be weak if any one of its narrators was known to be a liar or known to have bad memory. If he had not met the person he was supposed to be narrated from, or there was a weakness in the text or the sanad, then the hadith was said to be a weak or Zaif hadith. यहाँ पे key words underline, known to be a liar, have a weak memory, never met the person. 3 points हैं यहाँ पे कि what which hadith is considered weak. A known liar, मतलब झूठा आदमी, have bad memory, दिमागी हालत जो है वो हाफजा कमजोर है, and never met the person. ठीक है, never met the person क्या हुआ कि for example एक शख्स, एक बच्ची आई, उसका नाम था आबा खाड़ा, और उसने कहा मुझे जी हाजिरा ने ये बताया है, हमें 8th ग्रेड में थी. तो हमारी क्लास के अंदर कोई आबा खाड़ा नहीं है ना. So there is no आबा खाड़ा in our class 8th grade. एक झूठ तो उसका यही पकड़ा. फिर उसने कहा कि मुझे ये वाली बातें जो है हाजिरा ने बताई. तो जब वो 8th ग्रेड में ही नहीं थी तो उसने हाजिरा से मिली ही नहीं. जब वो हाजिरा से मिली ही नहीं तो ये हाउ कैन शी टेल. तो दिस इज कॉल्ड अ लायर. फिर उसके बाद ये है नेवर मेट द पर्सन. और उसके बाद फिर उसने क्या किया कि आज बताया कि ये असल में सर ने कहा था कि ये असाइनमेंट नंबर ये 10 करनी है. फिर उसके बाद दूसरे तीसरे दिन मिली तो कह रहे नहीं नहीं असाइनमेंट नंबर 10 अभी बाद में समझाएंगे सर, असाइनमेंट नंबर 9 करनी है. अच्छा, फिर उसके बाद ये 2-3 दिन के बाद फिर मिले तो कह रहे हैं असल में मुझे तो असाइनमेंट नंबर 8 करनी थी, मैंने 9-10 तो अभी की ही नहीं है, कोई नहीं करे. समझ में आ रहा है. इसका क्या मकसद है कि ये अ पर्सन हैज अ वीक मेमोरी. मेमोरी भी उसकी खराब है. क्या खराब है कि कभी एक बात कहते हैं, कभी कहते हैं एक बात कहते हैं. सर ये टोपी पहनते हैं, सर टोपी नहीं पहनते, सर टोपी पहनाते हैं. एक दफा डिसाइड कर लो सर टोपी पहनते हैं कि सर टोपी नहीं पहनते हैं. नहीं, कहते कभी टोपी पहनते हैं कभी नहीं पहनते हैं. सर की दाढ़ी है नहीं है, नहीं 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 ये दाढ़ी नहीं, ये दाढ़ी. दिस इज ऑल कॉल्ड बेल्ट मेमोरी. कि उसको यही याद नहीं रहता कि ये क्या किया, क्या करना है, क्या कहना है. Everybody clear about weak hadith? The person narrator who is narrating the hadith, तो उसके अंदर ये है उसका known to be a liar, has a bad memory and he has never met the person. तीनों point होने चाहिए when I ask you that what is the weak hadith.
Everybody clear? Any question here? Then comes the next one, fabricated hadith. Yusra, continue, read fabricated hadiths. Fabricated hadith. When a saying or action was attributed to the Prophet, peace be upon him, which he had not said or done, then the hadith was said to be fabricated. All The right, structure thank of you. hadith. Stop. Thank you. Now, this is fabricated hadith where we don't know, which I told you earlier, these people who make fabricated hadith, देखें, weak hadith, chance है कि चलो अच्छा सही बताना चाह रहा था, नहीं बता पाया. हसन हदीस, ओके, कोशिश कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम थी. Authentic hadith, absolutely correct. Fabricated hadith, these are the people who are kafir. Okay, anybody who makes a hadith according to the hadith of Prophet Muhammad, peace be upon him, these are called fabricated hadith. Rasul sallallahu alaihi wasallam ने फरमाया, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी ने मुझसे कोई ऐसी बात मंसूब की जो मैंने नहीं की या कही है, तो फिर जो है वो हम में से नहीं. नहीं, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. दिस इज सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो है आपको जो है कहा जा रहा है कि जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अगर उनसे ऐसी बात, मतलब हमें ऐसी कोई बात करनी ही नहीं है. अगर आपको बात जो है कोई आप बात आए जो आपको नहीं मालूम है और कोई शख्स कहे कि जो नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए और ये सही तरीका है सुन्नत का, और आपको नहीं मालूम है, तो खामोशी अख्तियार करें और कहें वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, और पीछे हट जाएं. उसके बाद यू शुड इन्वेस्टिगेट इट. जब आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सही बात थी या गलत थी. अगर वो सही बात है तो देन गो अहेड एंड फॉलो इट. अगर वो गलत बात थी तो बस फिर उसको बता दें. अगर आपके अंदर दिल में तपड़ है ईमान है, तो जाके उसको बता भी दें. मैं यहाँ पे क्यों बताता हूँ, मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ. इस्लाम में जो है मातम नहीं है. इस्लाम में जो है नबूवत के बाद कुछ नहीं है, कोई इमामत नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है. सब फैब्रिकेटेड हदीस हैं, झूठ बोलते हैं. इस्लाम के अंदर कोई ईद मिलादुन नबी नहीं है. अल्लाह हमारे मजहब में जो है सिर्फ दो ईदें, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर, बस. और ईद के एक और महीने आते हैं कि खुशी का दिन, हर जुमे का दिन ईद है. आज जुमे है, आज भी ईद है. यह हदीस से साबित है, खुशी के दिन को ईद का दिन कहा जाता है. तो जो है हमें अपने उस मजहब पे चलना है. लेकिन चाहे कोई भी नाराज हो, आप अगर एक शख्स है, आप मोटा ले लें, वो बुत के आगे बैठा है और इतनी जो अकीदत से बैठा है कि जो है मैं आपको क्या बताऊं कि कितनी अकीदत से बैठा है. अरे बल्कि कुछ दिखाई देता हूँ मैं, हैं अभी आप नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह आप आएंगे ना, तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस एंड आई विल शो यू. अभी एक पीरनी साहिबा के पास बैठे हुए थे और वो पीरनी और ये उनके मुरीद क्या कर रहे थे, अब आप लोग भी देखिएगा. 2 मिनट की क्लिप है. when we are going to come again in the next class, मैं उसको जैक कनेक्ट कर दूंगा. So these are fabricated. Coming back to fabricated hadith, किस तरीके से जो these are fabricated hadith that we should not be talking about Prophet Muhammad peace be upon him without knowledge. किसी बारे में इल्म नहीं है तो आप साफ साफ मना कर देंगे, भाई मैंने ये नहीं मालूम इस बारे में क्या है क्या नहीं. जिसके फॉर एग्जांपल हम व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो, तो हमने ये क्या किया था कि वी वर फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो नमाज पढ़ने की कोई जगह हो तो हमने वी हैव टेकन अ 2 bedroom अपार्टमेंट. तो उस 2 bedroom अपार्टमेंट में हम लोगों ने वहाँ पे जो थे कोई 20-25 लड़के होंगे, लड़के ज़्यादा ही होंगे, 50-100 के करीब होंगे मुस्लिम. तो हमने जो उसका लिविंग रूम था उसको जो है हमने मस्जिद बना रखा था, एक मुसल्ला कहते हैं उसको. तो उसके अंदर जो वी यूज्ड टू प्रे 5 times a day. ओ अमेरिका में रह के नमाज पढ़ रहे थे 5 वक्त. जी जी. उसमें अरबी भी आते थे, मलेशियन भी आते थे, इंडोनेशियन भी आते थे, अफ्रीकन भी आते थे, सेनेगाली भी आते थे, घाना से भी आते थे, नाइजीरियन भी आते थे, सऊदी भी आते थे. कौन नहीं पढ़ाता था, जो भी पढ़ा ले नमाज. समझ में आ रही है. इसमें कोई एक इमाम नहीं था. हमने ये अपनी ये जगह डेडिकेट कर दी थी.
تو اس کے بعد یہ سب آتے تھے, جو بھی ہوتا تھا پہلے آ جاتا تھا, جو بھی جس کو نماز پڑھانی ہوتی تھی وہ یہ پڑھا سکتا ہے, کسی کو منع نہیں تھا کہ آپ نماز نہیں پڑھا سکتے. تو جن کی قرات وغیرہ زیادہ اچھی تھی وہ لڑکے زیادہ نماز پڑھاتے تھے, میں بھی پڑھاتا تھا. تو دس از ہاؤ وی یوز ٹو. ہم نے تو یہ اپنی زندگی میں ہے, ویسے میں نے سوچا ہی نہیں تھا, میں گڈا اجا ہوں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور وہ سارے بچے اسٹوڈنٹ بھی کتنے اچھے ہیں جو ہمارے ساتھ تھے, اور ان سے پہلے بھی, کہ ہم نے یہ اپنے 2 بیڈ روم میں, ہم بیڈ روم میں رہتے تھے اور لیونگ روم کے اندر پورا اس کو خالی کیا ہوا تھا, خالی کر کے وہاں پہ جو ہے ہم نماز پڑھتے تھے. سمجھ میں آئی؟ تو آپ کو یہ ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ نماز یہ 5 ٹائمز, اور نماز ہم اذان دے کے پڑھتے تھے, 5 وقت کی نماز ہوتی تھی اور وہ کھلا رہتا تھا, جس کی مرضی آئے نماز پڑھے. تو اس کے اندر فجر, ظہر, عصر, مغرب, فجر اور عشاء کے اندر یہ زیادہ ہوتے تھے, اور یہ ظہر, عصر, مغرب میں کم ہوتے تھے, کیونکہ سب یونیورسٹیوں میں ہوتے تھے, ادھر ادھر ہوتے تھے. لیکن کھلا رہتا تھا, اور یہ جو بھی آئے جا کے نماز پڑھے. کہنے کا مقصد یہ, وہاں پہ پھر ایک صاحب آئے مجھ سے کہہ رہے ہیں یہ جوتے رکھے ہوئے ہیں آپ نے, میں نے کہا ہاں رکھے ہوئے جوتے. تو جوتوں کا نا ایک ریک تھا, جوتوں کا ایک ریک تھا, ریک سمجھتے ہیں نا اس کو, جوتے رکھتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ زمین سے 2-3 فٹ اٹھا ہو گیا, تو ہر کوئی اس کے اندر جوتے رکھ دیتا تھا. ہم بھی رکھتے تھے اپنے جوتے, تو اس کے اندر ہم باقی ننگے پیر پھرتے تھے, کارپیٹ تھا, اگر ننگے پیر ہی رہتے تھے, سب جوتے وہیں پہ اتار دیے جاتے تھے. کہہ رہے ہیں آپ لوگ سجدہ کرتے ہیں, سجدہ آپ کا نیچے ہو جاتا ہے, جوتے آپ کے اوپر ہو جاتے ہیں, یہ کیا ہے؟ میں نے انہیں دیکھا, میں نے کہا بھائی مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. اب وہ کیا کر رہے تھے, صرف ہمارے دل کے اندر جو ہے ایک غلط آئیڈیا پھینک رہے تھے کہ یہ غلط ہے. اب جب مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے, تو یہ علم کی نشانی ہے کہ آپ کہیں مجھے نہیں معلوم. انڈرسٹینڈ دس, یہ علم کی نشانی ہے کہ جس بارے میں آپ کو علم نہیں ہے منع کر دیں گے مجھے نہیں معلوم. تو یہ آج سے جو ہے 30 سال پہلے یہ علم کی نشانی آئی تھی میرے پاس, کہ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم. اچھا اب آپ چلے جائیں مسجد میں, کسی بھی مسجد میں چلے جائیں, وہاں پہ ریک رکھے ہوتے ہیں اور یہ جوتے اوپر ہوتے ہیں, سجدہ نیچے کر رہے ہوتے ہیں. مکے میں چلے جائیں وہاں پہ بھی جوتے اوپر ہوتے ہیں, سجدہ نیچے ہوتا ہے. مدینے میں چلے جائیں وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ آؤ. تو یہ شخص جو تھا ایک غلط قسم کا شخص تھا, جو کہ he wanted to put some kind of confusion into my mind. یہی لوگ جو ہے نا گند کرتے ہیں اور جو دنیا کو خراب کرتے ہیں. نماز پڑھنے آئے ہو, چپ کر کے نماز پڑھو, جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ. اسلام کے اندر یہ تغرے لگا لگا کے یہ لگانا اور درود لگانا اور یہ لگانا اور یہ پتہ نہیں اللہ بلا کیا کیا لگاتے رہتے ہیں, یہ جس کے یہ معنی بھی نہیں پتا ہوتے, یہاں سے لے کے وہاں تک جو ہے کیا کیا لکھتے رہتے ہیں, جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں کہوں کیا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہماری ایک مسجد کے اندر ایک کتنا بڑا تغرا لگا ہوا, اس میں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. میں نے ایک سے پوچھا, میں کہا اس میں یہ ہے کیا, اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ اچھا میں بتا دوں گا, پتہ نہیں مجھے کیا لکھا ہے. جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر لگایا کیوں ہے؟ بتائیں, سوچیں نا, آپ بھی سوچیں. یہ جتنے لڑکے ہیں ماشاءاللہ, حذیفہ ہے, محمد علی غوری ہے, مساجد کے اندر جاتے ہیں, تو ایسی چیزیں کیوں لگائی ہوئی ہیں جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں لگائے. ایک جماعت اسلامی کی مسجد تھی, انہوں نے جو جہاں پہ جو سجدہ کرتے ہیں وہاں پہ لا کے انہوں نے جو اللہ کا اسٹیکر لگا دیا بہت بڑا. تو میں نے ان کے امام صاحب سے بھی کہا, میں نے کہا کہ یہ آپ نے کیوں لگایا؟ کہہ رہے ایسی بچوں نے لگا دیا, وہ بچوں کا پروگرام تھا, مطلب لڑکوں کا پروگرام تھا, انہوں نے لگا دیا. اللہ کا 1.5-2 فٹ کا اسٹیکر لاگے انہوں نے جہاں پہ امام کے بالکل سر کے اوپر لگا دیا. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کے نام کی عبادت نہیں کرتے. انہوں نے میری بات مانی نہیں مانی. میں نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا, اتنی ساری دوسری مسجد ہے جہاں پہ نہیں لگا ہوا, میں وہاں جا کے نماز پڑھتا رہا. یہاں تک کہ 3-4 سال گزر گئے, پھر اس کے بعد یہ پھر وہاں پہ رینوویشن ہوئی تو پھر وہ اسٹیکر ہٹا. اب دوبارہ کیوں نہیں لگایا؟ لگاؤ نا. تو غلط چیز تھی نا بھائی, اگر صحیح چیز ہوتی تو آپ پھر لگا دیں.
وہاں پہ جو تاریخ روڈ کے پاس جائیں تو وہاں پہ اللہ والی چورنگی ہے, وہاں نماز پڑھنا شروع کر دو چاروں طرف سے. نہیں سمجھے؟ پھر سنیں, اف یو گو ٹورڈز طاریق روڈ کی طرف آپ جائیں تو وہاں پہ ایک اللہ والی چورنگی ہے, اس میں بہت بڑا اللہ بنا ہوا ہے, تو اس کے چاروں طرف بیٹھ جاؤ اور نماز پڑھنا شروع کر دو. کیا ہوگا؟ اٹس اے سن. یس اٹس اے سن. کیوں؟ اٹ از اے سن. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کے نام کی عبادت نہیں کرتے. ہمیں حکم دیا گیا کہ کعبے کا طواف کرو, کعبے کی طرف نماز کا رخ کرو. دس از وائی وی پوائنٹ ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن. اگر جو ہمیں یہ بتایا ہوتا, کوئی اور جگہ بتائی ہوتی تو ہم اس طرف کر لیتے. کیوں؟ اس سے پہلے جو تھا مسجد اقصی تھی, اس کی طرف رخ ہوتا تھا, اور تمام یہودی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں. تو جو ہے صحابہ کرام اجمعین اور مسلمان جو تھے, ان کو یہ بات ہوتی تھی کہ جو ہے ہم ان سے مختلف کیوں نہیں ہیں, جب وہ غلط ہیں تو مختلف کیوں نہیں ہیں. تو پھر اللہ عالم کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے, اللہ کا حکم آیا کہ جو ہے اپنا رخ جو ہے کعبے کی طرف کر لیں. دس از وائی ایوری بڈی چینج دیئر ڈائریکشن ان دا مڈل آف دی نماز. دیکھیں یہ تھا ایمان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ڈائریکشن نماز کے دوران میں کعبے کی طرف کیا, تو سب نے اپنا رخ جو ہے ان کے پیچھے جو ہے چینج کر لیا. یہ تھا ایمان. آج یہ ایمان والے پتہ نہیں کہاں ہیں, مجھے تو کوئی خاص ملے نہیں ہے ابھی تک, ڈھونڈ رہا ہوں پچھلے 18 سال سے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, what will happen next. So any questions so far? We have learned about the 4 kinds of ahadith. Any question regarding these 4 kinds of ahadith? پڑھو اس کو دوبارہ. اوکے, these are very important question ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور اس کے بعد یہ then we will come back in the next class and we will discuss more. All right, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.